Hello students, welcome to Olive Scholar classes. So today I will be taking the fourth part of chapter 2, that is microorganism friend and foe. This is from class 8 science. Okay. So today we have already discussed in the 3 parts many things about how these microorganisms they are friend and foe. Today we shall be discussing about food poisoning. The main focus will be on food poisoning. How the food gets poisoned, how the food is being spoiled, what lets these microorganisms to grow in a particular food. Okay? Then food preservation, how this food is food from being spoiled or from to prevent the growth of microorganisms, what can be done. So in this we shall be discussing all these 6 methods: chemical methods, preservation by common salt, preservation by using sugar, preservation by oil and vinegar, heat and cold treatments, storage and packing of foods. Okay? In heat and cold treatments, we shall be discussing about pasteurization and about sterilization also. Okay? In the last, I will be telling you some of the signs and symptoms of food poisoning. We should be aware that how you could get to know that a particular food has been poisoned to you. Okay, so let's start with food poisoning. Before starting, I would like to tell you that if you have not subscribed our channel Olive Scholar yet, please do subscribe it so that you can get daily updates of the videos which we are uploading. Okay, we upload videos daily. Please go and subscribe our channel. So how food poisoning occurs? So if we talk about food poisoning is due to consumption of food spoiled by a microorganism. Okay? What happens sometimes कि कोई food है जो कि spoil हो गया है किसके कारण? Microorganism के कारण. So we say that if we eat that food poisoning takes place. Okay? So microorganisms that grow in our food sometimes produce toxic substances. Okay? What is happening? Suppose this is a food. In this food, a microorganism will grow. Okay? A microorganism will grow, and when these microorganisms they grow in a food, they produce some toxic substance. What do they produce? They produce toxic substance. ओके सो अब ये जो फूड है इसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो किया और वो कोई टॉक्सिक सब्सटेंस इसमें प्रोड्यूस कर दिया. अब जब ये फूड को हम कंज्यूम करेंगे सो व्हाट इज गोइंग टू हैपन? फूड पॉइजनिंग विल अकर. ओके, ऐसा फूड जो कि स्पॉइल कर दिया गया है माइक्रो ऑर्गेनिज्म के थ्रू. कैसे स्पॉइल किया है माइक्रो ऑर्गेनिज्म को? कोई टॉक्सिक सब्सटेंस को प्रोड्यूस करके उस फूड को, और जब वो फूड कंज्यूम होगा सो इट इज गोइंग टू बी पॉइजनस. फूड पॉइजनिंग, व्हेन somebody is going to eat that food, somebody is going to consume, or you can say when somebody is going to eat that food poisoning is going to take place. Okay, so this makes the food poisoning, and this food poisoning sometimes become very serious illness. Okay, and that serious illness can even lead to death. Okay, so it is very important that we should preserve food in such a way that there should no growth of microorganisms and the food can't be spoiled. अब हमें क्या करना है? हमें अपने फूड को इस तरीके से प्रिजर्व करके रखना है कि उसमें माइक्रोऑर्गेनिज्म ग्रो नहीं करें, और जब वो ग्रो नहीं करेंगे तो वो हमारे फूड को स्पॉइल नहीं करेंगे. सो लाइक दैट वी कैन अवॉइड फूड पॉइजनिंग. ओके, सो नाउ वी शैल बी सीइंग हाउ वी कैन प्रिजर्व आवर फूड. ओके, सो one more thing I would like to tell you before that, कि these microorganisms they do not attack on the food. It's not like these microorganisms are going to attack any food item. No, it is some suitable temperature, some suitable conditions in which they survive and they grow. क्या है कि
spoils and their food poisoning takes place. So there are some factors that promotes the growth of microbes. Okay, फूड में माइक्रोब्स की ग्रोथ कैसे होती है? ऐसा नहीं है कि आपके घर में जो भी खाना बना सब में माइक्रोब्स ग्रो करके और आप खा के फूड पॉइजनिंग हो. इट्स नॉट लाइक दैट. देयर आर सम पर्टिकुलर कंडीशन इन विच the microbes grow, or you can say that conditions that promotes, there is a particular condition that promotes the growth of microbes. Okay, particular condition that promotes the growth of microbes. Okay, so what condition it can be? जहां पे कि माइक्रोब्स की ग्रोथ होगी. ओके, पर्टिकुलर कंडीशन इन विच द माइक्रोब्स आर गोइंग टू ग्रो. वो कौन सी कंडीशन हो सकती है? एक तो कोई पर्टिकुलर टेम्परेचर हो सकता है जिसपे कि माइक्रोब्स ग्रो कर सकते हैं. बहुत वार्म टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर यू कैन से. ठीक है. दूसरा मॉइस्चर हो सकता है जहां पे माइक्रोब्स की ग्रोथ हो सकती है. तो पर्टिकुलर कंडीशंस हैं जहां पे माइक्रोब्स की ग्रोथ हो सकती है. इट्स नॉट लाइक इन ऑल द फूड these microbes they grow and spoil the food. So now the question is कि how can we preserve our food? How can we prevent food poisoning? Okay, so or you can say food preservation. How can we preserve our food or food preservation? Okay, so let's see how can we preserve our food. So let's see the methods of food preservation. So if you remember in chapter 1 of this class 8 science only, we have studied about how grains are stored, how they are preserved. If you remember, we have read about different techniques of preserving the grains and storing them. So how do we preserve cooked food at home? वो तो बात हो गई जो raw food थे, grains का preservation था कि कैसे हम करते हैं. अब यहाँ पे हमें किसकी बात करनी है? फूड प्रिजर्वेशन की. जो घर पे फूड्स बनते हैं, जो होटल्स में फूड बनते हैं, उनको हम कैसे प्रिजर्व कर सकते हैं. ओके, यू नो दैट इफ यू लीव ब्रेड अंडर अ मॉइस्ट कंडीशन इट इज अटैक्ड बाय फंगस. यू विल सी सम वाइट ग्रेइश थिंग ऑन द ब्रेड. ओके, सो दैट्स व्हाई वी कीप आवर ब्रेड इनटू फ्रिज. ओके, सो वी शैल बी गोइंग विद so many things that microorganisms they spoil our food. Spoil food emits, you know that if a food is spoiled it emits a smell. Some smell comes, it tastes bad, the color also changes. Okay, so if what happens actually in that, is there any chemical reaction that makes the food to smell bad, that changes the color of a food, or that makes the food to taste bad? Okay, so how can we preserve our cooked food? So there are different methods which help us in preserving food from being attacked from a microorganism. Okay, so the first method is a chemical method. Okay, I shall be discussing in detail one by one for each of the methods. The second method of preservation of food is preservation by common salt. Okay, how can we preserve our food? By using a common salt. Okay, then comes preservation of food by using sugar.
Okay, we can use sugar also to preserve our food. Then comes preservation by oil. Different kinds of oils are used for preserving food, and also vinegar. Okay, you must have seen your mother using vinegar in different items just to preserve the food. Okay, we shall be studying about all these in detail. Then the very important one is the heat and cold treatment. Okay, in this method, what is done? The food is given a treatment. It is treated either with heat or cold. Okay, so heat and cold treatments. We shall be discussing about it also in detail. And the last and very important one is the storage and packing. Okay, storage and packing of food. How do we store food? How we pack them? It also is very important for preserving the food. Okay, so these are basically 6 methods by which we can preserve our food. It can be cooked food or some kind of other food. So you can just write food preservation. Okay, food preservation methods. So chemical method, preservation by common salt, preservation by using sugar, preservation by oil and vinegar, heat and cold treatment, storage and packing of food. Okay, so let's start with the chemical method. Okay, so if we talk about chemical method, what actually we do, we use some types of chemicals in a particular food to save the food from getting poisonous, or you can say from getting it contaminated. Okay, जिससे food contaminated ना हो, food poisonous ना हो, तो कुछ particular chemicals हैं जिनको हम use कर सकते हैं. Okay, salt and edible oils are a common chemical generally used to check the growth of microorganisms. कितनी growth हो रही है किस particular food में microorganisms को check करने के लिए सबसे important जो chemical method में क्या है? Salts and edible oils. Okay, salt है और edible oil है. These are the most important ones. Okay, edible oils. Okay, therefore they are called preservatives. इनको हम क्या बोलते हैं? Preservatives. Why are they called as preservatives? Because they preserve our food. That's why salts and edible oils, they are called as preservatives. Now what happens if we add salt or acid preservatives to pickles? बहुत अच्छा एग्जाम्पल है केमिकल मेथड में pickles का. You must have seen your mother when she makes pickles. What she do? She adds salt plus acids. Okay? क्यों डालती है आपकी मदर salt और acid से? क्या होता है इससे? This addition of salt and acid prevents the growth of microorganisms in a pickle. Pickle में microorganisms का कोई growth नहीं होता है. यही salt और acid अगर pickles में नहीं पड़े होंगे तो you can see on the surface of a pickle कि कुछ microorganisms की growth कुछ जालेदार सा दिखाई देगा आपको. तो what is that? It means that some microorganism has grown on that particular pickle. Okay? So we need to add salt and acids in a pickle just to preserve it so that microorganisms can't be grown. Okay? Another very good example of it is sodium benzoate. Okay? Sodium benzoate. Okay? So when do we use sodium benzoate? Okay? These are also common preservative. It is used in different fruits
shall be seeing the preservation by common salt. So common salts are used to preserve meats and fish for ages. Okay, common salt is used for preservation of either meat or fish. Okay, अब मीट और फिश को प्रिजर्व करते हैं, क्या यूज करते हैं? कॉमन सॉल्ट. बेसिकली व्हाट डज वी डू इन दिस? इट इज दैट मीट एंड फिश आर कवर्ड विद ड्राई सॉल्ट. दे आर कवर्ड विद ड्राई सॉल्ट. क्या करते हैं? मीट और फिश को किससे कवर कर देते हैं? ड्राई सॉल्ट से. तो दिस covering helps in checking the growth of microorganisms. Okay, when meat and fish are covered with dry salt, they checks the growth of microorganisms. और इससे क्या होता है कि मीट और आपके जो फिश होते हैं वो स्पॉइल नहीं होते हैं. Okay, so this was about meat and fish, and other preservatives where common salt is used for preserving is like gooseberry. Gooseberry you must have heard. Gooseberry is there. In India we call it amla. Okay, so it is very common, amla in India. Amla or amla you can say. In English it is called gooseberries. तो आंवले का मुरब्बा मिलता है मार्केट में, या आंवले की बहुत सारी कैंडीज आती हैं या पर्टिकुलर चीजें होती हैं. तो ये खराब क्यों नहीं होती हैं? ये भी इसलिए नहीं खराब होती है बिकॉज इट इज बीइंग प्रिजर्व्ड बाय common salt. Okay, then comes next raw mangoes. Raw mangoes हैं या mango powder आता है, तो वो क्यों नहीं खराब होते? Again it is preserved by a common salt. Okay, उसके बाद tamarind है. Okay, tamarind में क्या होता है? इमली. इमली बहुत यूज होती है इंडिया में, तो खासतौर से साउथ इंडियन डिशेस में तो बिल्कुल टैमरिंड पड़ता है. तो वो जो टैमरिंड होता है वो खराब तो नहीं होता. इट इज बिकॉज कि उसमें भी ये कॉमन सॉल्ट से प्रिजर्व किया जाता है. ओके, सो प्रिजर्वेशन ऑफ कॉमन सॉल्ट मेनली यूज फॉर प्रिजर्विंग मीट एंड फिश. देन सम ऑफ द आइटम्स लाइक gooseberry, commonly called amla in India, raw mangoes, tamarind, etc. Okay. Now next method is the preservation by using sugar. Sugar is also a very good preservative. It is used for preserving jams. Jams में sugar पड़े होते हैं. Okay, different types of jellies are there. Jellies are also preserved by using sugar. Then some squashes are there. Okay, squashes are also preserved by using sugar. ठीक है? After that there are some real juices. Okay, etc. So mixing sugar in jams, jellies, squashes, real juice, it prevents the growth of microorganisms and it keeps them preserved. Okay, jam को preserve करने के लिए, jellies को preserve करने के लिए, squashes हैं, real juices etc. इनको basically क्या करता है? हम sugar add करते हैं. अब sugar ऐसा क्या करता है जिससे कि ये preserve होते हैं? तो what happens कि when we add sugar, sugar reduces the moisture. Okay, what does sugar do? Sugar reduces moisture. जो नमी होती है पर्टिकुलर जैम में या जेलीज में या जो भी फूड्स है, उसमें क्या होता है? जब आप शुगर डाल दीजिए तो शुगर नमी नहीं आने देता है, उसमें मॉइस्चर को रिड्यूस कर देता है. तो इससे क्या होता है? जब मॉइस्चर नहीं आएगा, वी ऑल नो दैट दीज माइक्रोऑर्गेनिज्म दे नीड अ पर्टिकुलर टेम्परेचर और दे नीड मॉइस्चर फॉर देयर ग्रोथ. और जब आप मॉइस्चर ही नहीं होगा तो दीज माइक्रोऑर्गेनिज्म दे कांट बी ग्रो. सो दिस इनहिबिट्स द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया which spoils jams, jellies, squashes and all. ठीक है?
bacteria which spoils the food. Which spoils the food. Okay? So this was about preservation by using sugar. Sugar डाल के मॉइस्चर को रिड्यूस किया जाता है, उससे जो बैक्टीरिया की ग्रोथ होती है वो रुक जाती है, इनहिबिट हो जाती है, रुक जाती है या स्टॉप हो जाती है, और बैक्टीरिया फिर पर्टिकुलर फूड को स्पॉइल नहीं कर सकता. तो शुगर वाले एग्जांपल है जैम, जेलीज, स्क्वेसेस एंड रियल जूसेस. ओके. So the next one is the preservation by oil and vinegar. Okay, it is very common use. Oil और vinegar तो सबके घरों में होता है और बहुत commonly use होता है. So oil और vinegar prevent the spoilage of food. Like कौन से foods इससे बचते हैं? Pickles. Pickles में आपने देखा होगा कि आपकी मदर vinegar put करती है, white vinegar put करती है, oil put करती है. Why does she do so? Just to prevent the growth of bacteria. Okay? और bacteria cannot live in the atmosphere जहाँ पे oil और vinegar होता है. Okay? तो बैक्टीरिया की ग्रोथ प्रिवेंट हो जाती है. उसके बाद पिकल्स के बाद डिफरेंट वेजिटेबल्स आ गया. डिफरेंट वेजिटेबल्स हैं जिसमें कि विनेगर और ऑयल डाला जाता है, उसमें भी फूड जो है खराब नहीं होते हैं. देन कम्स योर फ्रूट्स. फ्रूट्स में भी ऑयल और विनेगर का यूज किया जाता है जिससे कि ये फ्रूट्स भी नहीं खराब हो सकते. फिश है, मीट है, एंड these are often preserved by this method, oil and vinegar. And next is vinegar is also used in tomato ketchup which we use. So जो मार्केट से आप टोमेटो केचप लाते हो या जो घर पे टोमेटो केचप बनता है, वैसे तो टोमेटोज अगर आप फ्रिज में भी रखोगे तो कुछ दिन बाद खराब हो जाते हैं. बट वो टोमेटो केचप क्यों नहीं खराब होता? What is the reason behind that? It is because some vinegar, some acids are being used in that. Okay, you must have seen that कुछ स्मेल आती है, चाहे वो केचप्स में हो या सोया सॉसेस हो, चिली सॉसेस हो, तो इन सब में विनेगर पड़े होते हैं जिसकी वजह से बैक्टीरिया की जो ग्रोथ है वो स्टॉप हो जाती है. सो इट डजंट लेट these food items to get spoiled. Okay, so this was the preservation by oil and vinegar. Examples are pickles, vegetables, fruits, fish, meat, tomato ketchup, soya sauces, and etc. Okay. Now the next one is heat and cold treatment. Okay, this is also very important. Heat and cold treatment. As the name itself suggests, कि if we heat some particular food, it will be preserved. Okay, from getting it spoiled. या तो उसको किसी cold temperature पे आप रखते हो. If you put your particular food at some cold temperature, it is again preserved. You can use it for longer. Okay. Now one question I would like to ask you that heat का example लेते हैं, and the question I would ask you is that when a milk comes at your house, either it's a cow milk or a buffalo milk, why does your mother boil it before storing it or using it? ऐसा क्यों होता है? जो cow या goat milk है, why don't you use it directly? Why your mother boils it and then you use it or you store it? What does that do? उसको boil क्यों किया जाता है? जब boil करते हैं हम milk को, boiling of milk, तो आप boil कर रहे हैं तो means आप क्या provide कर रहे हैं? आप milk को heat provide कर रहे हैं. We are providing heat to milk. Okay, so if we are providing heat to milk, what does it does? When we eat milk, it kills many microbes or microorganisms, you can say. Okay, so boiling of milk is done to kill many
heating. Okay. Another example we are going to take for cold treatment. Cold treatment की बात करें तो रेफ्रिजरेटर, रेफ्रिजरेटर तो सबके घरों में होता है, फ्रिज जिसको बोलते हैं. So what does a refrigerator do? रेफ्रिजरेटर में कुक्ड फूड को मदद रख देती है, जो ब्रेड्स होते हैं आपके घर में उनको रख दिया जाता है, या और भी बहुत सारे स्पाइसेस हैं, और this one cooked foods are there, bread is there. Okay, different चीजों को रेफ्रिजरेट क्यों किया जाता है, फ्रिज में क्यों किया जाता है? तो फ्रिज में रखने से क्या होता है कि टेम्परेचर लो, फ्रिज is cold, it is cold, so it lowers the temperature, so it inhibits again the growth of a microbes. Microbes की growth को inhibit करता है रेफ्रिजरेटर, और फाइनली क्या होता है कि आपके जो भी कुक्ड फूड है या स्पाइसेस हैं वो खराब नहीं होते हैं. अब आप अगर ब्रेड को देख लो, if you keep bread outside, it is going to be spoiled by some fungus in 2 or 3 days. Okay? लेकिन वही ब्रेड अगर आप फ्रिज में रखते हो तो वो 4-5 दिन तो चलता है अच्छे से, या और longer it can go. Excuse me. So what is the reason behind that? When bread is put in, when we put bread in the fridge, it inhibits the growth of microbes. वो जो फंगस की ग्रोथ है वो रुक जाती है, तो जो है कि ब्रेड जल्दी खराब नहीं होते हैं. ओके, अब कोल्ड और हीट ट्रीटमेंट में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आई वुड लाइक टू डिस्कस अबाउट. देयर आर 2 मेन टर्म्स, दैट इज पॉस्चराइजेशन एंड स्टेरिलाइजेशन. So let's discuss about them. Okay. So in heat and cold treatment, there is a one kind of treatment that is called pasteurization. So what is pasteurization? In case of pasteurization, what is done? कि a particular item, particular food is being eaten. It is being eaten at. Can you imagine what will be the temperature it is heated? It is heated at 700 degrees Celsius. Okay. 700 degree C, such a high temperature. In pasteurization, the particular food is heated. I will be giving you the example, which are those foods, and they are heated just for how much time? 15 to 30 seconds. Okay. In pasteurization, a particular food is heated at 700 degrees C for 15 to 30 degrees Celsius. For 15 to 30 seconds, and then suddenly they are chilled and stored. उसके बाद उसको suddenly chill करेंगे. Suddenly उसको chill करेंगे मतलब suddenly उसके temperature को down करेंगे और उसको ठंडा कर देंगे और उसको store कर लेंगे. Okay? So ऐसा करने से होता क्या? इससे क्या होता है कि जो भी growth होती है microbes की, that gets prevented. The growth of the microbes is prevented by the method of pasteurization. Okay, so now if we take the example of pasteurization milk, packet milk जो हम लोग लाते हैं मार्केट से, what is that? That are pasteurized milk. So basically pasteurized milk में क्या होता है कि the milk is being heated at 700 degrees C for 15 to 30 seconds, and suddenly the temperature is being down, or suddenly it is being chilled, and it is stored in a packet. That's why the milk that we bring from the market को खराब नहीं होता, we just consume it in the fridge, or it is being till the date, some expiry date is mentioned, तो अब तक वो चलता है. So the reason is that those are pasteurized milk. So these pasteurized milk, they can be consumed without boiling, as it is free from harmful microbes. Oh, okay. जो cow या buffalo की milk आता है, that you can't consume it without heating it, because you need to boil it just to kill all the microbes present in that. But in the pasteurized milk which we get from the market, that is the packet one or
in prevention of microbes. Okay, helps in the growth of microbes. Sorry. So this term pasteurization was given by a scientist whose name was Louis Pasteur. Okay, what was his name? His name was Louis Pasteur. So on his name, the technique was named as pasteurization, and this came up in 1864. कब दिया था लुई पास्चर ने pasteurization method को? 1864 को. So pasteurization is a method in which milk is heated at 700 degrees C for 15 to 30 seconds, and suddenly it is being chilled and then stored. Okay, so this was about pasteurization. Next, the question is that the milk that comes in packet are not spoiled. Can you give me the answer for that? The answer is that those milks are pasteurized milk. Okay. So this was about pasteurization. It is a heat and cold treatment का ये example है, and it is mostly asked in examinations. Okay. And the next one is sterilization. Okay, what it is? Sterilization. So sterilization में क्या करते हैं? Sterilization is a process in which food is heated to a high temperature. ठीक है, food को heat करते हैं बहुत high temperature पे. वो कितना high होगा? It will be greater than 100 degrees C. 100 degrees C से ऊपर ही उसको हीट करेंगे for a sufficient time. उस particular time के लिए फूड की हीटिंग करते हैं किस टेम्परेचर पे? greater than 100 degrees C. Okay, so in this method both the container as well as the content are sterilized. Okay, sterilization में क्या करते हैं? जिस कंटेनर में particular फूड को रखना है उस कंटेनर को भी स्टेरिलाइज करते हैं और फूड को भी स्टेरिलाइज करते हैं. Okay, so sterilization is a very common method, mostly used in laboratories. जिनको बहुत सारे लोग होते हैं जो different experiments करते हैं लैब में, तो there is a कभी-कभी डर रहता है कि हाँ कोई माइक्रोब्स ग्रो कर जाएंगे, उनके पर्टिकुलर कोई कल्चर को ग्रो कर रहे हैं या कुछ भी ग्रो कर रहे हैं, तो उस पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ग्रो करने का बहुत चांसेस होता है. तो what do they do? The petri dish they uses and the different items which they are using, first they sterilize all those items. Okay, तो जितने भी ऑपरेटर्स उनको यूज करना है वो उनको स्टेरिलाइज करते हैं. हॉस्पिटल्स में आप देखोगे तो जो भी फोर्सेप्स एंड डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स आर यूज्ड इन ऑपरेशंस एंड ऑल दैट आर स्टेरिलाइज्ड. हाई टेम्परेचर पे उनको स्टेरिलाइज करते हैं. ऐसा क्यों किया जाता है? This is only because just to kill these harmful microorganisms. इससे harmful microorganisms kill हो जाते हैं. Okay. Our very common example which is used in our house is that baby bottle. Baby bottle is always sterilized. You must have seen some mothers that they just put the bottle in a warm water, you can say, and they just heat it. What is that? That is also sterilization, just to make the bottle free from the germs. Okay, so sterilization is very commonly used manywhere in hospitals, in laboratories, in our homes also. And in this sterilization, the container as well as the content, जो content है means कि जो item है, food item है या जो भी है, और जो कंटेनर है जिसमें उसको रखना है, दोनों को स्टेरिलाइज करते हैं. Both are sterilized. Okay, so this was about sterilization. Next is the storage and packing of food. So why these food are stored and packed? If some of the food items which we get from the market, they are packed, and we also store the food. Why this is done? This is just done to allow the food to be eaten for some time. अब क्या अगर आप फूड की स्टोरेज या पैकिंग नहीं करोगे तो वो तुरंत खराब हो जाएगा, आप उसको बाद में यूज नहीं कर सकते हो. इसलिए
इसलिए कि वो कुछ दिन चल सके, कुछ टाइम के लिए चल सके. The storage and packing of food is done so that it can be used for a week. Some foods are being used for months. Okay? तो कुछ months और कुछ weeks के लिए वो food items use हो सके. You must have seen that कि जो भी items market से packed आते हैं, they are with mentioned expiry date. What is that expiry date? It is basically कि at that particular time, within that time period, the food is not going to be spoiled or there will be no attack of microorganisms. And after that, there is a fear that microorganisms would attack it. Okay? So we should always follow the expiries which are being mentioned in our date. If it is written that it should be consumed in 3 months, we should consume it within 3 months. क्योंकि 3 months तक माइक्रो उसमें पर्टिकुलर ऐसी पैकिंग उसकी की गई है, ऐसे स्टोरेज किया गया कि कोई पर्टिकुलर माइक्रोब्स पे अटैक ना कर सके. सो जो भी टाइम पीरियड मेंशन है, इफ इट इज मेंशन फॉर 6 months, just use consume this within 6 months. Okay? So basically food storage allows food to be consumed or to be eaten for some time, that may be a week to some months after that particular food that has been harvested, rather than to be used it immediately. हमको तुरंत यूज ना, हार्वेस्टिंग के बाद कोई भी पर्टिकुलर फूड को तुरंत ना यूज करना पड़े, इसलिए उसको पर्टिकुलर स्टोरेज और पैकिंग के साथ दिया जाता है. So these days you must have seen that dry fruits, even vegetables, are sold in a sealed airtight packet to prevent the attack of microbes. Airtight क्यों किया जाता है उनको? जिससे कि उनके पे माइक्रोब्स का कोई अटैक ना हो सके. ओके? सो रिड्यूसिंग द किचन वेस्ट बाय प्रिजर्विंग अनयूज्ड और अनईटन फूड फॉर लेटर पर्पस. ओके? सो दिस रिड्यूसेस कि किचन के जो फूड्स हैं आपके वो वेस्ट ना हो और फर्दर आप उनको यूज कर सकते हो. ठीक है? सो इफ वी टॉक अबाउट प्रिजर्विंग पेंट्री फूड्स, सो पेंट्री फूड्स में बहुत सारे ऐसे फूड्स हैं. लेट्स टॉक अबाउट पेंट्री फूड्स लाइक स्पाइसेस आर देयर. ओके? And very dry ingredients are there, like flour we use. Okay? And rice are there. Like this, there are many items that are used in cooking, in daily cooking. अब राइस को आप रोज तो नहीं खरीद सकते हो, स्पाइसेस को आप रोज तो नहीं खरीद सकते हो, बट आप क्या देखोगे कि दे आर बीइंग शील्ड आइदर इन सम गुड पैकिंग और कुछ इस तरीके से उनकी पैकिंग की जाती है ताकि कि वो जल्दी सो दैट कि वो जल्दी से स्पॉइल ना हो और देयर कुड नॉट बी अटैक ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म. ओके? एंड दे कैन बी यूज्ड इवेंचुअली इन कुकिंग. ओके? देन अ मेथड इज देयर, canning. Canning is very common method. In canning, what is done? A sealed container is used. Container is there that is being sealed, or you can say the food items is being put in a container and the container is being sealed. So seal करने से क्या होता है, जो food item है वो खराब नहीं होता है. Okay? और next is that there are many frozen foods.
ठीक है, कोई भी फूड आइटम पैक हो रहा है उसके अंदर ऑक्सीजन नहीं जाए, जो है कि पर्टिकुलर पैकेट के अंदर ऑक्सीजन को रिड्यूस कर दिए, तो ऑक्सीजन नहीं है मीन्स वी हैव क्रिएटेड एन एनवायरनमेंट लाइक वैक्यूम जैसा एनवायरनमेंट हमने बनाया, उसमें ऑक्सीजन नहीं है। सो द रिडक्शन और द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन स्लोज द फूड डिग्रेडेशन। क्या जब ऑक्सीजन नहीं होगा या ऑक्सीजन बिल्कुल एब्सेंट होगी या ऑक्सीजन कम कर दी गई है, तो क्या होगा, जो फूड खराब होने वाला है, जो फूड डिग्रेड होने वाला है, जो फूड कंटामिनेटेड होने वाला है, उसके चांसेस कम हो जाते हैं और जो स्टोरेज टाइम है दैट गेट्स इंक्रीजेस। तो इट इंक्रीजेस द स्टोरेज टाइम ऑफ पर्टिकुलर फूड। ओके, तो बेसिकली वैक्यूम क्लीनर में क्या किया जाता है कि समटाइम्स अ यूज ऑफ गैस फ्लश इज यूज्ड। ओके, सो इनटू अ पैकेट्स just to reduce or eliminate oxygen content. Okay, गैस फ्लश किया जाता है। गैस फ्लश मीन्स गैस को रिमूव किया जाता है। कौन सी गैस को रिमूव किया जाता है? ऑक्सीजन गैस को। ओके, ऑक्सीजन को पर्टिकुलर पैकेट में से रिमूव किया जाता है एंड वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर गैस यूज्ड इन दैट इज अ नाइट्रोजन। नाइट्रोजन इज बीइंग added. Okay, so this was about vacuum flushing. So vacuum flushing is a very natural way to reduce oxygen from some packed food item. Okay, so this was all about food preservation. We have seen different methods, chemical methods, common salt is used, sugar, oil, vinegar, heat and cold treatment, and storage and packing of food. So this was about food preservation. Okay, so let's see some of the signs and symptoms of food poisoning. How can you get to know that a particular food has been poisoned or a food poisoning has occurred? Okay, so the first very thing, if a food poisoning occurs, that you will feel sick. You will feel like nausea. Okay, so nausea feeling will be there. There will be a feeling of nausea. Second thing is that in case of food poisoning, vomiting occurs. Okay, vomiting, continuous vomiting होने लगती है. In severe cases, diarrhea also takes place. ठीक है, अगर बहुत ज़्यादा prolonged vomiting हो गई तो diarrhea also occurs. Okay, so sometimes this diarrhea is so severe that there is a you can see blood and mucus also comes. Okay, and some kind of stomach cramps in the stomach will be there. You will be feeling some uneasiness in your stomach, some abdominal pain, you can say stomach cramps in the stomach will be there, some kind of abdominal pain will be there. Okay, so one thing I would like to tell you कि it may be that you are not suffering from all of these factors, but mostly vomiting और nausea, ये तो फूड पॉइजनिंग की सिम्टम्स हैं। किसी केसेस में जब बहुत ज़्यादा सीवियर होता है तो कुछ अलग तरीके का भी रहता है कि कम, अगर बहुत सीवियर नहीं है तो कुछ कम होते हैं सिम्टम्स, और आपको वीकनेस की फीलिंग आएगी, वीकनेस की फीलिंग होगी. यू विल फील लाइक दैट यू आर एनर्जीलेस, you don't have energy, you are energyless. Okay, then loss of appetite. Okay, loss of appetite will be there. You will not feel like you want to eat anything. There will be a loss of appetite. In some cases, few people have
केसेस में बहुत लोगों को चिल्स होते हैं, कोल्ड वाली फीलिंग आती है, कुछ ठंड सी लगेगी, और इन सम केसेस देयर इज अ ache in muscles. Your muscles are going to pain. Okay, there is a ache in muscles. So these are some of the common signs and symptoms of food poisoning. Nausea is there, vomiting, diarrhea, cramps in stomach, abdominal pain, weakness feeling, loss of appetite, high temperature, chills, ache muscles. It totally depends upon which type of food poisoning you are having. If it is very serious, it sometimes leads to death also. And if the food poisoning is a little bit, you must be having only few vomits and nausea feeling. Okay, so this was all about, in the fourth part we have discussed the microorganism, friend and foe, about food poisoning, food preservation and all. Okay, so this was all for today. Again I would like to tell you that please go and subscribe our channel Olive Scholar, and we are also having our app. You can just go in Google Play, download our app Olive Scholar CSCS e-learning. There you can find interesting videos are there, very nice scripted PDF notes are there. We also have MCQ questions in which